Namaskar. Good evening, friends. Let me first of all congratulate the young boys and girls for reciting something so interesting and providing the right context to this today's program. तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने जो प्रार्थना की है उस प्रार्थना को सुनते हुए हमारे पास पानी की समस्या देश में कभी खड़ी ना हो। Let me firstly congratulate all those who have made this great camp, great land converted into a great center of learning. All my friends who are teaching here, who contributed to this whole thought process, as Sahil said, it evolves over a period of time. All the founders, all those who really supported it, and I must congratulate them. But this is something which is unbelievable. And I could never imagine that something like this could really be here so close to Delhi. And I must really congratulate all of you for doing that. So, great work. Rishihood University, as you can see very clearly, is going to be one of the best center of learning for each and every person who they will be aspiring to come here. And I'm sure we are really heading towards it. So congratulations to all of you, and really look forward to many more achievements from you all as a team. So let me briefly talk about this very interesting program. This is a very unique program in which we are going to discuss all aspects of water. The challenges of water are well known, so I will not dwell upon that too much. I will very briefly talk about it. As you know, we are almost 17% of the world population, maybe 16.8 or closer to that. And how much water we have? We actually only 4% of the fresh water of the world that is available in India. So if you look at it, just the numbers, 4% and 17%. So you say it's a big problem. Yes and no. And that is what is a challenge of managing water in India. Yes, because little and too many people want to use it. But 4% is not small. If you look at it, some countries have too much of water. For example, Latin America has almost 24% of the water. And only 6% of the population. Canada has far bigger water resources, and their profile of the water resources in Canada or in Latin America or India differ greatly. Maybe I'll mention it a little later. Canada has only 3% of India's population. The land mass is much bigger. And because I mentioned land, there is a direct relationship between land and water, which we seldom highlight. Because when there is a water, where does it come from? It falls from the skies. There is no laboratory which can create water. Technically, yes, you can create a water in the laboratory. When Sahil was learning in IIT, or even before that, because IIT is much advanced, before that even in first year science course you actually make CO2 and you convert into water. It's possible. But on the scale that we require, you cannot create water. So where does it come from? It falls from the skies in two forms. It comes as rain
and sometimes it also falls from the skies in form of a snow. And when the snow melts, it again becomes part of the rivers and it becomes water. It comes from there. But when it comes, when the rain is falling, when now we are in the rainy season, can you say now I know problem of water because I have seen too much of rain? You have to use that for the remaining 365 days. Or even when it is raining, you have to use it not immediately but maybe after a few hours. Because when the rain is falling, your water problem is not solved. So where does it come from? Where do you solve how do you use it then? Unless it is stored somewhere on the ground, on the land, you cannot use it. Can the rivers flow in air? Where do the rivers flow from? You mentioned about so many rivers. अभी आपने जो प्रार्थना की, इसमें अनेक नदियों का आपने नाम लिया. उसमें से एक मैं आपको बताता हूँ हमारी जो चिंता है. So the rivers, the streams, the well, the groundwater. यहाँ पे अग्रवाल साहब मुझे बता रहे थे कि ग्राउंड वाटर से पानी मिल जाएगा, लेकिन ग्राउंड वाटर का मतलब क्या? वाटर इज इन द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, एक्चुअली नॉट इन द ग्राउंड. सो इफ देयर इज नो लैंड, यू कैन नॉट यूज द वाटर. सो देयरफॉर when we talk about water problem, we have to also link it with land problem. And we have only 2.2% of the land of the world. So 4% water, the land even is smaller. That's why we have high population density, a tremendous pressure on land. इसलिए आप देखें कहीं पे भी लैंड के लेते हुए झगड़े ज़्यादा चलते हैं. So water problem, when you want to address it, you have to address it in a very composite way. That's why आपने जो प्रार्थना की उसमें आपने कहा प्रकृति को हम विनती करते हैं, बिकॉज ये लैंड पानी बनाना हमारे बस की बात नहीं है. प्रकृति बना सकती है, उसकी रक्षा करना, उसका सही इस्तेमाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम कर भी सकते हैं यदि हम सोच सही हो तो. और ये बात हमारे बहुत प्रधानों को पता थी, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर ही सोच समझ के अपने जो प्रार्थना की उसी तरह से हम लोगों ने सोचा था. अभी मैं देख रहा था हमारे राष्ट्रम स्कूल के महाअनुभव मुझे बता रहे थे कि हमारे वेदा में राष्ट्र की कल्पना थी. The thought of nation was born much later. So therefore when people say Rashtra means nation, it is not true. We have to develop that and we have to articulate that, we have to explain that. Like when we say religion means dharma, which is not true. Dharma is much more different than religion. But that again is not for today's discussion. But इसीलिए यदि हम बना नहीं सकते तो इसलिए हम प्रकृति को प्रार्थना करते हैं हमेशा. इसके लिए जो आपने की और सही माने में इसके लिए मैंने कहा कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी तरह से की, क्योंकि वही प्रार्थना से ही हमें पानी मिल सकता है और मेहनत से उसको रक्षा हो सकती है. तो टुडेज चैलेंज therefore for India is so little water. We have to use it in a very judicious way, and then it can actually help everybody. But then क्या पानी सिर्फ हमारे लिए चाहिए? ये हमारी सोच है, क्योंकि पूरे विश्व में we are part of a biodiversity. But there is no biodiversity, creation of biodiversity, the creature of biodiversity will be as selfish, as self-funded, or self-centered as a human being would be. So we think water is for me. अभी आपने मुझे पेड़ दिया, क्या वो घर में जाने तक भी शायद रहेगा, लेकिन कल परसों तक उसको पानी नहीं देंगे तो जिंदा भी नहीं रहेगा. तो उसके लिए भी पानी चाहिए. हमारे पहले इस भूतल पे
हम लोग कुछ मिलियन ईयर्स से हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे से पहले the animals were born much before the human beings were born. We are born much later. In fact, they were not born, we probably would never have been born. Because it's a pro-evolution that we are created because of the animals. क्या उनको भी पानी नहीं चाहिए? उनको भी पानी चाहिए. तो पानी सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है. हमारी ये सोच ऐसी है क्योंकि हमने सब जो कानून भी बनाए विश्व में, सिर्फ हमारे देश में नहीं कहीं पे भी, वो हमारे ह्यूमन बींग्स ने इस तरह से बनाए कि हम हमारे बारे में सोचते हैं. हमको ये भूल गए कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे हमारी पैदाइश हुई. इसको बिना सोचते हुए हम लोगों ने सब बातचीत करनी शुरू कर दी. इसलिए हमारी सबसे बड़ी विश्व की चिंता और जो हमारे सामने जो चुनौतियाँ है उसके कारण यही है. यदि हम अच्छी तरह सोचते हैं, और ये हमारे वेदास में, यदि वेदा में चर्चा करेंगे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन आज उसके बारे में बातचीत हम नहीं करेंगे. तो पानी, water is a major issue for us, and to deal with that, as I said, there are many challenges, and I am just coming to why this program. So you cannot create water, but you can manage water. And if you don't understand the linkage between how the water is created, creation is a wrong word, but how do you get it, you will never understand how to manage it. So, if you don't understand the linkage between water and ecology, you will never be able to explain to the people that how the water should be managed. And to understand the linkage between ecology and water, it cannot be done only in an academic institution like this. It has to be with the minds of people. Unless people themselves understand the linkage, they will never be able to solve the water problem, because they are trying to solve the water problem by fighting with the neighbor in the village. कि आपकी वजह से मेरे को पानी नहीं मिल रहा है. वो बोलता है भैया मेरे पास कुछ भी नहीं, आप मेरे साथ झगड़ रहे हैं. वो बोलता है नहीं, तो वो बोलेगा मेरे पड़ोसी की वजह से. तो ये we can fight with each other, but that will not solve the water problem. So we will fight and not solve the problem unless you understand the linkage between how the water is first of all available on the planet. And that is because of, आपने जैसे प्रार्थना में कहा, because of प्रकृति. If you don't maintain environment, you don't maintain ecology, you don't maintain forest cover properly, you will never be able to get water. So forget, if you don't get water, where is the management issue? So first and foremost, unless you understand the origin of how the water is created, you will not understand. And this should not be explained to the high-ended population of the country. This should be understood by the common people. And where is the problem, water problem? Not in the ministries of India, not in the Chief Minister's office, but in the villages of India. So if you can explain to the villagers, actually one person in one village, how the water problem, and problem is much later issue, how the water itself is created, how is it made available. And if they understand, that's the hope, not necessarily if they understand the problem is solved, but at least the beginning of the right path, the right action will begin. Therefore, this program is for making this not just awareness. Awareness is one part. कि पानी की problem है, that is awareness. कुछ करना चाहिए is awareness. But a knowledge of how the water is made available and how it has to be managed, that entire management of knowledge is something which I hope this Jal Symposium is a beginning. This is not just you have learnt and now it's over. The university will continue to work with the people, and hopefully we will try to create at least one person per village. There are almost 750,000 villages in India almost. So we can create one person in a village who can become then protector of water, because he will understand what the water is coming from. So he is the Jal Rakshak. So this symposium is an effort to make that understanding about water issues in India properly. आपको मैं कह रहा था कि आपकी प्रार्थना में आपने बार बार सरस्वती नदी का नाम लिया. सरस्वती नदी कहाँ है?
बनती नहीं। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि जैसे सरस्वती का हो वैसे बाकी के नदियों का नहीं होना चाहिए। और यदि नहीं होना है तो हमें एक बड़ी मात्रा में जन आंदोलन जल सिंपोजियम की शुरुआत से करना होगा। लोगों को इस बात से पूरी तरह से उनको बात का पता करना। We have to provide them the information, knowledge, not just information, and it has to become एक जन आंदोलन बनना चाहिए। लेकिन आंदोलन किसके साथ लड़ने के लिए नहीं, तो साथ में मिलते हुए एक प्रकृति की जो रचना है उसके आधार पर किस तरह से पानी की समस्या को हल किया जाए उसके बारे में सोचने की जरूरत है। The origin is very important. And as I said, the other part that we can do is management. So what is management? I'm just briefly telling you. One day I will like to come here again because I hope I get more opportunities to visit all of you and spend more time and interact with you more. Management part is very important. But as I said, water is limited. You know where we normally say, टीवी पे इसके लिए मैंने कहा अवेयरनेस की बात है। अवेयरनेस में क्या लिखा थे कि आप जब अभी हमारे दिस इज ओनली फॉर द मेल्स कि आप जब दाढ़ी करते हैं तो नल को बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही है, बट द नीड टू कीप द टैप ओपन व्हेन यू कैन ओपन इट अगेन। तो हमको लगता है ये करने से पानी की समस्या हल हो जाएगी। यदि वो बात हल हो जाएगी तो दाढ़ी नहीं करेंगे तो समस्या नहीं होगी। आपके जानकारी के लिए जो 4% पानी की बात मैंने की, you know where the most of the water is used in India? It is used in agriculture. एग्रीकल्चर का दाढ़ी के साथ कोई संबंध नहीं, तो दाढ़ी बंद करने से पानी की समस्या कैसे हल होगी? दाढ़ी की समस्या, दाढ़ी से और पानी की जो समस्या उसको तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके मैं नहीं कह रहे थे उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन if you don't understand the broad picture, 85% or so the water in India is used for agriculture. Now, क्या एग्रीकल्चर बंद करना चाहिए तो पानी की समस्या हल होगी? तो क्या खाएंगे क्या? तो एग्रीकल्चर तो चाहिए ही। तो पानी की समस्या दूर करने का मतलब ये भी नहीं होता कि खेती को ही बंद कर दीजिए। जैसे दाढ़ी का बंद नहीं करने से समस्या नहीं होगी, वैसे खेती से समस्या नहीं है। लेकिन किस तरह से हाउ टू यूज द ऑप्टिमम एंड द मोस्ट एफिशिएंट वाटर इन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन बिकम्स क्रॉपिंग पैटर्न, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ऐसी जगह में जैसे पंजाब में हम लोग ग्राउंड वाटर निकालते हुए उससे हम चावल उगाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली इन इंडिया, बिकॉज देयर आर पीपल इन दिस प्रोग्राम, आप अलग अलग जगह से है, नॉर्मली चावल रेनफेड क्रॉप, पानी से जो, इसलिए इस समय में दिस पार्ट ऑफ द ईयर वी ग्रो पैडी। तो क्रॉपिंग पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पानी खेती तो करनी ही चाहिए, और किसान बेचारे मेहनत तो इतनी करते हैं, तो कहते हैं हमको पानी, अभी आप एक बार हम कहेंगे किसान को जाके, आप कहेंगे कि पानी की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से पानी की वजह से मेरे को पानी मिलता ही नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। जस्ट लुक एट द पैराडॉक्स that while 85% of water is in agriculture, the farmer is not getting right water. The management issue again. But the cropping pattern is extremely important in relation to water management. India is one. We have got 35 agroclimatic zones in India. What should be grown where should depend upon the soil condition, depends upon the agroclimatic condition, depends on the water availability. If you manage that also, we will be able to provide more water to farmers only. So we should not take away the agriculture water from farmers and give it to somebody else. No. That 85% can even become 90%. Because agriculture is very important for India. More than 2/3 of the population depends on agriculture. That's a livelihood issue.
सो फार्मर को तो पानी मिलना ही चाहिए, खेती के लिए पानी देना ही चाहिए, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन कुछ देश करते हैं, जैसे इजराइल जैसे लोग, वो भी करना चाहिए। कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो उसमें होना चाहिए। ये सभी बातों के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है। वाटर मैनेजमेंट का इशू एग्रीकल्चर रिलेटेड। देयर इज अदर इशू। वन इज द मैनेजमेंट ऑफ sectoral management. There is a water quality issue. We fight for water, but we don't bother about quality. And there are some part of India, because we are doing not groundwater extraction, but we are doing water mining, which is very dangerous. Water mining. उसके लिए arsenic एलिमेंट्स भी पानी में आ जाते हैं। उसकी वजह से कितने लोगों को क्या क्या बीमारी होती है कि पता नहीं। पैंडेमिक से हम लोग तो डर गए थे, लेकिन आर्सेनिक वाटर से को तो पता ही नहीं है। पैंडेमिक को पता चल गया, लेकिन ये दिस इज स्लो पॉइजनिंग। इट विल बी हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द पीपल विल सफर इन मल्टीफेरस वे। सो वाटर क्वालिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू। इनफैक्ट 2/3 ऑफ द डिसीजेज इन इंडिया आर वाटर बोर्न. 1/3 of the fatalities are got of waterborne diseases. So it's a very important issue. So quality is also an important issue. Then we must appreciate water also as an equity issue. There are some people don't get any water. There some people get too much of water. So the equity is also created by nature. जैसे मैंने कहा कि लैटिन अमेरिका में इतना पानी है कि हमारे पास पानी ही नहीं है। अब ये तो प्रकृति ने निर्माण किया था, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारे देश के अंदर ही कुछ लोगों के पास ज़्यादा पानी है, कुछ में नहीं है। तो ये वी हैव टू एड्रेस दैट इशू आल्सो। वी हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट एज अ ह्यूमन राइट मिनिमम वाटर 40 liters, 60 liters, 80 liters that we can decide. But at least that much of water has to be provided to every individual. So this is also an important issue related to water management. So there are many aspects of water management issue. And then finally, because I have to go to Delhi, we are going to stay. I wish I could also stay on such a beautiful place. But I am also trying to solve the water problem here. If I had stayed here, I would have taken more water drink. But the water that we get, and I was saying most of it comes from the rain. Actually 85% of the water in India is from the rainfall. In case of US, for example, it is different. You get water during summer because when the ice melts, you get water. India में आता है हमारे Himalayan belt, but it's only not more than 15%. So the problem is when water is available, when it rains a lot. बाद में पानी तो उसको स्टोर किस तरह से किया जाए। सो नेचर ने भी स्टोरेज के प्रावधान बनाए थे। हमारे तालाब, हमारी नदियाँ तो स्टोरेज है, लेकिन उसको हमने ख़त्म कर दिया। एक ज़माने में when I was a student, I was taught by a very eminent teacher कि बैंगलोर इज द सिटी ऑफ लेक्स। तो अभी मैं क्या बैंगलोर अभी गया था, बैंगलोर लेक कहाँ पे? लेक दिखता है क्योंकि जहाँ लेक था वहाँ मॉल हो गए, जहाँ लेक था वहाँ बिल्डिंग्स हो गए। तो लेक बेचारा चला गया, लेक कहाँ गया मालूम ही नहीं। तो दैट वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज अ स्टोरेज ऑफ वाटर। बट स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर बिकॉज एज आई सेड द लिंकेज बिटवीन लैंड एंड वाटर। So there are many aspects to this water issue. But all of this has to be understood properly, and then we can actually train the army of people, not the army to fight anybody. But young, not so young necessarily, not young, but people who are willing to work, and they will try to be trained by the university as Jal Raksha. They will make the Raksha of that particular water body. Even a small lake. And that is what is really necessary, that understanding these whole complexities of issues, not necessarily technically, technologically, scientifically, not necessarily, but understanding the linkage and understanding it in a holistic way. We need to create some army of people, and that's what the Jal Symposium will make a beginning.
and hopefully those who are attending this program, they will remain part of this process, and eventually we should be able to address the problem. अपने शुरुआत तो सही किया भगवान से प्रार्थना करते हुए, लेकिन भगवान कहेगा ठीक है मैंने प्रार्थना सुन लिया, अभी बताइए आप क्या करने वाले हैं। तो प्रार्थना के बाद हमारी जो जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस कार्यक्रम के आधार पर जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे ये सिलसिला जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में और नदियों की स्थिति सरस्वती जैसे नहीं होगी। और यही उम्मीद के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। खास करके हमारे ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के सभी लोगों ने जो इसमें कार्यक्रम आयोजित करने में योगदान दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि ऋषिहुड यूनिवर्सिटी शायद ऐसी, मैं नहीं कहूँगा एक ही है, लेकिन और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें समाज के साथ रिश्ता बढ़ाने का काम शिक्षा के आधार पर ही नहीं और तरीके से करने का भी प्रयास किया है। और शिक्षा की परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ साइंस, लिबरल आर्ट्स, टेक्निकल इश्यूज तक ही सीमित है? शिक्षा का मतलब ये भी है कि लोगों की सोच में बदलाव लाते हुए लोगों को सही रास्ते पे चलने के लिए उनको जो जरूरत है इसे टूल देते हुए उनको मजबूत बनाने का काम भी शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। ये काम करने के लिए ऋषिहुड यूनिवर्सिटी ने जो प्रयास किए है, जो शुरुआत की है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ऋषिहुड सही माने में ऋषियों के ज़माने में जो पानी था उस तरह की स्थिति हमारे देश में आएगी, इसमें उम्मीद रखता हूँ। आपकी जानकारी के लिए भी मैंने कहा ऋषि के लिए इसके लिए बताता हूँ। आपको पता है राजकुमार सिद्धार्थ अपना राजमहल छोड़ते हुए अपने आप को खोजने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। वो इस बात से दुखित थे कि समाज हमेशा दुख से पीड़ित रहता है, इसलिए उन्होंने छोड़ के चलना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को इसका एहसास किया था कि दुख किस तरह से लोगों को सहना पड़ता है। तो वो चल रहे थे। अभी इन इस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इवेंचुअली गौतम बुद्ध, उन्होंने देखा एक जगह पे झगड़ा चल रहा है। उन्होंने पूछा क्या हुआ भाई, अभी तो मैं इतने दुख से अभी अपने को अवगत किया, अभी और क्या नया झगड़ा है? मतलब पानी को लेके, पानी इतना बह रहा है, फिर भी उस समय भी पानी का झगड़ा था। आप समझे कितने हजारों साल पहले। तो आज तो ऋषि के जमाने की जो बात है, पानी था लेकिन झगड़ा था। आज पानी नहीं इसलिए झगड़ा है, लेकिन पानी से लेते हुए ही कुछ ना कुछ झगड़ा पहले से शुरू हुई है। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति भी पैदा हो कि पानी के कारण लोगों में झगड़े की स्थिति पैदा ही न हो। ऐसी स्थिति लाने के लिए भी ये कार्यक्रम जो आज का किया जा रहा है, वो भी मुझे लगता है एक अपने आप में उसमें भी अपना योगदान देगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पानी विषय से मेरी पत्नी मेरे साथ है, वो कहेगी मैं हूँ महाराष्ट्र से। मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग बातों से जाना जाता है। मुझे मालूम नहीं कि इसको कीर्तन, आप जानते हैं कीर्तन किसको कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं मालूम? वो जो कोई भगवान के नाम से काम करके जो कीर्तनकार होता है, वो हर गांव में जाके उस बात को करते जाते हैं। लेकिन वो भगवान वही है कि भगवान तो थोड़ी बदलेगा ही गाँव से दूसरे गाँव में गए। तो मैंने पानी का लेते हुए 5,500 से ज़्यादा मैंने कीर्तन नहीं कहूँगा लेकिन व्याख्यान दिए, ज़्यादा से उससे ज़्यादा ही पूरे देश में। तो भी मेरी पत्नी हमेशा आती थी, तो हम पत्नी को पता था कि अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन इसलिए मैं भी रुकता हूँ। लेकिन आपको सबको धन्यवाद भी देता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग मिलकर पानी की समस्या को हल करने के लिए कोशिश पूरी तरह से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।